So we have a few questions left of the last exercise, which we will do later after completing the question answer session. Okay. And मिस वो लीस्ट कॉमन फैक्टर भी आप बता दें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। Teacher, Yes, yes. I actually didn't understand one question. याद आ गया आपको? अच्छा, कौन से? यस, कौन सा कह रहे? Miss उसमें ना मतलब it is divisible. So how can we find out that if the number is divisible or not? By dividing it. How can we find if 25 is divisible by 5 or not? By dividing it. If you get a whole number, it means it's divisible. Yes. If you get a decimal number, it means it's not divisible. Yes. Done? समझ आ गई? Yes, miss. क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? Yes, miss. Miss, I've Okay. actually completed chapter 1. I remember it. Okay, very good, very good. ओके अच्छा, सबसे पहले एक बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, एंड दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई prime and composite numbers in big value. This is a very important question and very easy question which was asked by one of the students. So let's answer this question. If we have a very big number, how are we going to identify if it is a prime number or a composite number? So what are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have only one factor, one in itself. Composite numbers are those numbers which have more than one factor. To answer this question, we need to learn divisibility rules. Divisibility rules are going to help us answer this question. So today, I think so before starting doing any other thing, we should practice divisibility rules first. Most of you may know the divisibility rules, and some of you may don't know the divisibility. So we can just revise them. Okay. I think I need. Okay. So what is divisibility rules? So divisible by 2. Divisible by 2. So a number is divisible by 2 if its unit place is either 0 or multiple of. Means if a number ends with 0, 2, 4, 6, 8. Number ends with 0, 2, 4, 6, 8. For example, if you have a number 3, 5, 4, 0, 2, 6, 8. This is a very big number. So do you know if it is divisible by 2 or not? How you're going to check? You're just going to check the last. If last digit is 0, 2, 4, 6, or 8, then yes, it is divisible by 2. If it is not these numbers, then it is not divisible by 2. So tell me if this number is divisible by 2 or not. It is, ma'am. It is. Why it is divisible by 2? Because it ends with a even number, or it ends with a number 2, 4, 6, or 8. Okay. Next is divisibility by 3.
Okay. So a number is divisible by 3 if sum of all sum of its digits is a multiple of. For example, yes, students, if you have a number that is divisible by 3, what does it mean? Sum of all of its digits is a multiple of 3. For example, if you can write a very big number which is divisible by 3. Miss, will it have a 6 or a 9 in it? For example, you have 27. So how are you going to check if it is divisible by 3 or not? Just add the digits. We will add 2 plus 7. What is 2 plus 7? 9. 9 is divisible by 3. 9 is a multiple of 3. So it means yes, the Yes. 27 is also multiple of 3. So if you take 999, then you don't know 999 is divisible by 3 or not. So what we are going to do, we're just going to add 9 plus 9 plus 9. 9 plus 9 is 18. 18 plus 9 is 27. Then you are going to again add them. 2 plus 7 is 9. So 9 is divisible by 3. So it means 999 is also divisible by 3. Got it? So if you have, Teacher, yes, yes, yes. whenever we have to divide, suppose we have to divide by 6 and we have a number like 73. So we can plus it up because it's 10. We can use this for any number, this trick. Yes, for any number. For example, we have 498. Now we don't know if it is divisible by 3 or not. What we're going to do, we're going to add all the digits. 4 plus 9 plus 8. What you will get? What will you get? 21. 21. Now you don't know if 21 is divisible by 3. You will again add them. 2 plus 1. What you will get? 3. And you know 3 is divisible by 3. So it means this big number is also divisible by 3. But miss, if we have a division question, how can we know which number is it divisible by? We are just going to learn divisibility rules just. Then we are going to tell you. Okay. We will come to that question later. Now tell me, did you understand if a number is divisible by 3 or not? You just need to add all the digits and then see if that number is divisible by 3 or not. Okay? Yes, So it's miss, I easy for you. understand it now. Now you actually don't need to divide 498 like this by 3 and then you need to check if it is divisible by 3 or not. You just need to add all the numbers and see if the number is divisible by 3. If the sum of the digits is divisible by 3, then that number is divisible by 3. Got it? Yes, Okay. Coming to divisible by 4. miss, can I Yes. tell? A number is divisible. Yes, tell me. If the last two digits are divisible by Last 4. two digits are divisible by 4. So if you have a number and you don't need to check complete number that if it is divisible by 4 or not. So you just need to check the last two digits. If it is divisible by 4, then the whole of the number is divisible by 4. Okay. For example, you have a big number 2, 1, 4, 6, 4, 8, 4. Now, my question is this big number divisible by 4 and you don't know if it is divisible by 4 or not. You will just check the last two digits. Do 84 comes in the table of 4? Yes. Yes, ma'am. So it means all of this big number is divisible by 4. So if the last two digits are divisible by 4, then all big number is divisible by 4. Divisible by 5. Okay. Now,
A number is divisible by 5 if its unit place is 0 or 5. So now I have a number, for example, a big number. A big number is 21469850425. So now you don't know if this number is divisible by 5 or not. But you can check the last digit. The last digit is 5, so yes, it is divisible by 5. If the last digit is 0 or 5, then the number is divisible by 5. Divisible by 6. Miss, can I tell this one? Yes. All of you can participate and tell if you know the answers, okay? What is divisible by 6? 2. If it's divisible by both 2 and 2. 3. So if I have a big number and I need to check if it is divisible by 6 or not, what will I do? I will Miss, check you it. have to check if it's divisible by 2 or 3. So if, for example, I have 580. First of all, I will check it with 2. For checking it with 2, because the last number is 0, so yes, it is divisible by 2. Now for 3, what will I have to do? I have to add them 5 plus 8 plus 0. What is the answer? 13. It is not divisible by 3. So it means it is not divisible by 6. It should be divisible by both 2 and 3. If it is not divisible by any one number, then it's not divisible by 6. Okay, let's check another number, 348. So is 348 divisible by 2? Yes, the last number is 8, so it's divisible by 2. Now let's check for 3. 3 plus 4 plus 8. So it would be 7 plus 8, 15, Miss, the answer is 15. 15. And now let's do this. 5 plus 1 is 4. 5 plus 1 is 6. Sorry. 1 plus 5, which is equal to 6. So 6 is divisible by 3. So it means 348 is divisible by 2. It is And divisible 3, by which 3. means it's divisible So by it means 6. it is divisible by 6. 6. Everything clear to everyone? Yes. Yes. Now, rule of 7 is very interesting. Divisible by 7. Okay. So now what is divisible by 7? We need to double the last digit of the number and then subtract it from the remaining number. If the result is divisible by 7, then the original number will be divisible by 7. For example, divisible by 7. Okay. For example, you have a big number 999 and you don't know if this number is divisible by 7 or not. So what will be the first step? Step number 1. We need to double the last digit. What is the last digit? 9. Double the last. Double last digit. Okay, what is last digit? 9. So we get 18. The next step is subtract it from the remaining number. So now we double the last digit and now we're going to subtract it from the remaining number. So this was the last digit. We double it and subtract it from the remaining number. Step number 2 is subtract from remaining. Miss, I didn't understand this point. The double the last digit and subtract it from This is the remaining. last digit. The last digit is 9, right? What is the double of 9? What is the double of 9? 18. 18. So this is the first step. You need to double the last digit. Okay. Now second step is you need to subtract it from the rest of the numbers. So rest of the numbers I'm going to subtract it. 9 minus 8 is 1. 9 minus 1 is 8. And 9. I got 981. Teacher, Got it? Yes. Yes. I didn't understand it. You understand double the last digit? No, I didn't understand the division by 7. डिवीजन बाय 7 अभी चल रहा है, इट्स नॉट कंप्लीटेड yet. ओके, सो डिवीजन बाय 7 में क्या होगा?
द लास्ट डिजिट हमारा क्या है 9. सो आपने लास्ट डिजिट को डबल करना है. डबल मतलब 9 का डबल क्या होता है? व्हाट इज द डबल ऑफ 9? 18. ठीक. अब जो उसका डबल आंसर आ जाएगा उसको आपने बाकी जो नंबर्स बच जाएंगे उसमें से माइनस कर देना. तो बाकी नंबर्स क्या बच गए? 999, उसमें से 18 को माइनस कर दिया, मुझे 981. समझ आ गई? अब दोबारा से Yeah. समझो. फिर लास्ट, अब इसका लास्ट Yes. डिजिट क्या है? अब इसका समझो समझो, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1. इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा? 1 को डबल करेंगे तो क्या आएगा? 2. 2 आएगा. 2 को बाकी नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो बच जाएंगे. 8 माइनस 2 6 9. अब फिर समझो, 6 को डबल कर देंगे तो क्या आएगा? या आप 12. 96 12. 96 7 के टेबल में आता है? No. Do 9 No. comes in the table of 7? No. So it means ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है. ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप एक ही एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा. 131. बच्चों लास्ट डिजिट क्या है इसका? 6. 6. 6 का डबल क्या होता है? 12. तो हमने बाकी रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर, क्या आ जाएगा हमारे पास? 119. 111 miss. अब 119 को आप चेक करो कि 7 के टेबल में आता है? I'm gonna say no, but I'm not clear. No. दोबारा चेक करो. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप फिर दोबारा से लास्ट डिजिट देख लो. Miss, यू कैन 7 डू द 17s are 7 17s. वेरी गुड. अब आप देखो 9 का डबल क्या होता है? 18. 18. 18 को रिमेनिंग नंबर यानी कि 11 से माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 7. और 7 इज डिविजिबल बाय 7. इसका मतलब 1316 7 से डिविजिबल है. आप पहले But स्टेप पे भी miss, खत्म, आपने but पहले miss स्टेप पे भी is देखा कि ये 17 से मल्टीप्लाई होके आंसर दे रहा है. लेकिन अगर पहले स्टेप पे आपको आंसर ना मिले तो आप एक और दफा कर सकते हो प्रोसेस, एंड देन यू कैन गेट द आंसर. यस, नाउ but आस्क द miss, क्वेश्चन. isn't there a one-way step to solve this question? नो नो, यू कैन डू मल्टीपल स्टेप्स ऑल वन डे. ओके, नाउ 203 एक नंबर है, इसका बताएं मुझे. यस बच्चों, 203 एक नंबर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा? 6. 6 को रिमेनिंग डिजिट्स माइनस कर लें. 20 माइनस 6 क्या होता है? 14. 14 7 के टेबल में आता है कि नहीं? Yes, miss. 7 2s are. Yes, miss, it does आता है. come. इसका मतलब 203 भी 7 के टेबल में आता है. अब तो आपको समझ आ गई होगी. एक लास्ट नंबर और कर लेते हैं, Yes, miss. 209. इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3. इसको डबल करें तो क्या आता है? 6. 6. माइनस कर दे. 9 माइनस 6 302. 203 आ गया. अब फिर हमें नहीं समझ आ रही क्योंकि 203 एक बिग नंबर है, तो हमें दोबारा करना पड़ेगा. अब फिर हम 3 लेते हैं. 3 का डबल करें तो क्या आता है? 6. 6 को माइनस कर दें. 20 माइनस 6 क्या आता है? 14. तो क्योंकि 14 एक 14. स्मॉल नंबर है, फॉरेन समझ आ गई कि 14 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7. अब तो आप लोगों को 7 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्लियर हो गया होगा, राइट? Yes. 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 ओके, नाउ कमिंग टू डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8. Okay, a number is divisible by 8 if the number formed by the last three digits is the last three digits is divisible by 8. बच्चों 4 के डिविजिबिलिटी रूल में याद है हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखने थे. 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं. कैन यू Miss, अंडरस्टैंड दिस why? थिंग? We Miss, have why? to, by नहीं, रूल होता है. रूल में there is no y. If we have this number 23992, तो इतना बड़े नंबर को आपको नहीं पता 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बस लास्ट 3 डिजिट्स देख लो. 992.
अगर 992 को बताओ, 992 8 से डिविजिबल है? 8 times 1 is 8, 8 times 2 is 16, 17, 18, 19, 8 times 4 is 32. So yes, 992 8 से divisible है, इसका मतलब कि पूरा नंबर 8 से divisible होगा. Got it? So for the divisibility rule of 8, you need to check the last 3 digits. Okay, divisibility rule for 9. Miss, can I tell? Yes, If the sum of all digits is divisible by 9. very good. Sum of all digits is divisible by 9. तो फिर जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 3321, इसको हमें नहीं पता है फिर डिविजिबल बाय 9 और नॉट. हम सम ले लेंगे 3 + 3 + 2 + 1. तो व्हाट वी विल गेट? 3 + 3 is 6, 7 8 9. तो आंसर 9 आ गया. इज 9 डिविजिबल बाय 9? तो इसका मतलब है कि Yes. 3321 9. Yes. अच्छा, 10 का सबसे आसान होता है. 10 का कौन बताएगा? If the last digit is 0. Very good. So the 10 is If the the last most easiest digit one. is 0. If it has, Miss, can you repeat divisible by 9? yes, Can you again explain the divisibility rule of 9? यस. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है, आपको नहीं पता है फिर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. तो आपने क्या करना है? सब नंबर्स के डिजिट्स को ऐड कर लेना है. ऐड करके जो आंसर आएगा वो अगर आपका डिविजिबल बाय 9 होगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा. गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 10 भी समझ आ गया. Yes. Miss, if the last digit has a 0 in the end. यस. अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 12 का कोई रूल नहीं होता, बट एक ट्रिक है. डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 12, अगर नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो तो फिर वो 12 से भी डिविजिबल हो. इसी तरह डिविजिबिलिटी बाय 15 का एक रूल होगा, एक ट्रिक होगा. डिविजिबल बाय 15, अगर नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो 15 से भी डिविजिबल होगा. इसी तरह डिविजिबल बाय 18 का रूल होगा. अगर नंबर 3 और 2 और 9, 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो 18 से भी डिविजिबल होगा. इसी तरह डिविजिबल बाय डिफरेंट नंबर्स के को प्राइम फैक्टर्स को हम देख सकते हैं. तो बच्चों, हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों सीखे हैं? अब आपको सबसे पहले मुझे ये बताएं, कैन यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल्स? Yes. ओके. तो अब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स, व्हाई आर वी लर्निंग डिविजिबिलिटी रूल्स? Because we don't know if a bigger number is a prime number or a composite number. So if we have a bigger number now, for example, we have a very big number 3321. अब हमें नहीं पता ये प्राइम है, ये कंपोजिट है. तो हमें पता है कि प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन इन इटसेल्फ. तो अगर हमें इसका एक से ज्यादा कोई और फैक्टर मिल गया, यानी कि इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर इसका होगा 3321, राइट? अगर हमें इसके अलावा कोई और फैक्टर मिल गया तो ये कंपोजिट हो जाएगा, और अगर हमें कोई और ना मिला तो ये प्राइम मिलेगा. अब हम देखते हैं कि ये 1 आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 + 3 6 7. अब हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 3 + 3 + 2 + 1, 3 + 3 6 7 8 9, 5 से 9 है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है. तो हमें इसका एक फैक्टर और मिल गया. 1 3 3 2 1 के अलावा 3 एक और फैक्टर मिल गया. तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. तो ये कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट. तो बच्चों, जब आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत अच्छे से याद होंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि हम इसकी कुछ वर्कशीट्स भी कर लें नेक्स्ट क्लास में. तो जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो व्हाट विल हैपन, कोई भी बिगर नंबर आपके पास आ जाए, आपने चेक करना है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 5 से, तो आपको कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे वो डिविजिबल होगा. अगर होगा तो दैट विल बी अ कंपोजिट नंबर, और अगर कोई ऐसा नंबर ना मिल सके तो देन दैट विल बी अ प्राइम नंबर. तो पहले स्टूडेंट का जो क्वेश्चन का आंसर था वो हमारा कंप्लीट हो गया. अच्छा, नेक्स्ट हमें कोई बच्चिया या बच्ची ने क्या बोला?
Miss, the one where we had to find the parameter, the area. पेरीमीटर एरिया हम करते हैं। अच्छा, एक बंदे ने बोला था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रही बिगर नंबर, स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता बिगर नंबर का, राइट? ये भी किसी का क्वेश्चन था। 7056, ये एक बिगर नंबर है और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बच्चों 7056 का मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूंगी। तो अब हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 6 से एंड पे, अब यहाँ पे भी हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल्स है दे विल हेल्प अस। तो एंड पे 6 है तो आई विल स्टार्ट विद 2। 2 टाइम्स 3 is 6, 5 is 10, 2 is 4, 8 is 16. 2 times 1 is 2, 7 is 14, 6 is 12, 4 is 8. 2 times 8 is 16, 8 is 16, 2 is 4. 2 times 4 is 8, 4 is 8, 1 is 2. 3 times 1 is 3, 4 is 12, 7 is 21. So 147 आ गया इन पे। So what will be 147? 7 times 2 is 14, 1 is 7, 3 times 7 is 21, 7 times 1 is 7। तो बच्चों स्क्वायर रूट में आपने हमेशा पेयर्स बना लेने होते हैं। तो आपने देखा 2 और 2 एक पेयर बन गया, फिर 2 और 2 एक पेयर बन गया, फिर 3 और 3 एक पेयर बन गया, और फिर 7 और 7 एक पेयर बन गया। जब सब पेयर्स बन जाए तो स्क्वायर्स कैंसल्स आउट विद द स्क्वायर रूट, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आप लोगों का स्क्वायर रूट होगा। ये बात क्लियर होगी सबको कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ बिग नंबर? You just need to do the prime factorization, find out the squares, and after finding the squares, then you will come to the square roots of that number. Okay. अब हम आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके पास एक चीज स्क्वायर है, तो बच्चों व्हाट इज द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर? हमेशा होता है लेंथ, दिस इज द लेंथ, Times height. ब्रेथ, लेंथ। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ ऑल ऑफ द साइड्स। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हो गया, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी ब्रेथ है, यहाँ भी ब्रेथ है, बट स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हम सबको लेंथ लिख सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 है। बच्चों ये बात समझ आई? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ टाइम्स ब्रेथ, बट स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, तो हम इसको एल टाइम्स एल भी लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स लेंथ टाइम ब्रेथ, लेकिन ये सारी लेंथ ही मतलब सब इक्वल होती है, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है, तो पेरीमीटर कैन बी 4 है। यहाँ तक बात समझ आई? एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, समझ आ गई बच्चों? Yes. मिस, ये जो आपने Yes. पैरामीटर का अभी लिखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये नहीं समझ आया। बच्चों आपके पास एक स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, राइट? तो आप लिख सकते हो the what will be the parameter of square? Sum of all the sides, one side, two side, three side, four side। अब इस साइड को मैंने नाम दे दिया L, इसको भी नाम दे दिया L, इसको भी नाम दे दिया L, इसको भी नाम दे दिया L। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? 4L। 1 2 3 4, 4 टाइम्स L, यानी कि L मतलब जो सी भी लेंथ है आपकी, 5 है, 10 है, जो भी है, ठीक है। So can you understand parameter of sphere now? यस मिस, थैंक यू। Okay. Yes, no. तो अब हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, एल स्क्वायर होता है 250। एल स्क्वायर ही होता है ना 250। बच्चों ये बात समझ आ गई कि एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। मिस, ये 250 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन नंबर 10, वी आर यस। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1B। ओके, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1B। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में
Miss, I can't hear you. Hello, can you hear me now? Yes, Miss. ओके स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से Yes, इसको कंप्लीट कर रही हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एल होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 250, तो एल के आंसर हमारे पास 15.8 आ गया। अब पैरामीटर क्या होता है? पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल विच इज 15.8। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15.8 क्या होगा हमारे पास? Miss. Miss, what 15.2। did you divide it with that you got 15.8? सॉरी, Teacher, can you repeat? आपने अभी divide किए ना यस यस। ये 250 को, what did you divide it with that we got 15.8? No, you're not going to divide it. Take the square root of 250. बच्चों, I'm just going to repeat it. Hurry up, please listen to me. एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 250 है। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर के। हमने दोनों साइड्स पे वी हैव टेकन स्क्वायर रूट। व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 250 you will get 15.8. Okay, after you get 15.8 you get the value of L which is 15.8. Now what is the perimeter of square? It is 4 multiplied by L. So 4 multiplied by 15.8 is 16.63.2, which is your answer for the parameter. So you're done with this. Miss, can you repeat? Miss, I don't What understand the area of the square, please. Can you repeat? area of Area of square. area of square is L square. What are you not understanding? But you don't understand how did I get 15.8? Yes. Just take the square root of 250. Okay? Okay, Miss. Okay, just take the square root of 250, you will get 15.8. Okay? Okay, now we need to just complete our remaining questions because we just need to. And okay, and now tell me all of you that when can you give me the test for chapter number 1? Miss, maybe tomorrow. Can you give me test on? No, I can give you 1 day for preparation. You can give me the test on Wednesday. Okay. So now the highest common factor of two numbers. We have a few questions left and we're going to complete them today. The highest common factor of two numbers is 175. So HCF is equal to 175. Lowest common multiple of two numbers is 1 to 600. Now there is a rule. Let's suppose the two numbers are A and B. Okay. The rule is A multiplied by B, which is equal to HCF multiplied by LCM. So what is A into B? What is HCF? 175. What is LCM? 1 to 600. So multiply 175 with 1 to 600. Hurry up. Hurry up. Multiply 175 with 12600. Don't you have the calculators? Just multiply and tell me the answer. Okay, we got 2205,000. So the product of two numbers is 2205,000. Now they are asking both the numbers are greater than their HCF. Find the two numbers. So now we are going to find the two numbers. अब which two numbers? There are two numbers जिनको हम multiply करेंगे तो आंसर 2205,000 आ जाए। तो हमने वो दो numbers फाइंड करने कि वो कौन से दो numbers होंगे जिनको हम multiply करेंगे तो ये आंसर आ जाए। और वो दोनों नंबर्स एचसीएफ से भरे होने चाहिए। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास? 175, यानी कि वो 175 से बिग होने चाहिए। तो अब ये बहुत बिग नंबर है तो हम इसको 500 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक नंबर 500 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? लेट्स सपोज अगर इसमें से एक नंबर 500 है तो फिर बी क्या होगा कि इसका इनको मल्टीप्लाई करें वी गेट 2205। यस स्टूडेंट्स, 4410। मुझे कैसे पता चला? अब देखो, मैंने सोचा कि हमारे पास सबसे पहले सुन लो बच्चों, हमारे पास एचसीएफ गिवन इज 175।
The LCM given is 1 to 600. Now they are saying हमारे पास एक रूल है, टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल है. तो दोनों नंबर्स को व्हेन वी प्रोडक्ट हैं, तो HCF और LCM को प्रोडक्ट किया तो वी गेट 2205000. ठीक है. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने से आंसर ये आता है. वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट करने से ये आंसर आता है हमें नहीं पता, बट वी नो कि वो दोनों नंबर्स HCF से भरे हैं, यानी कि 175 से बिगर. लेट्स सपोज मैंने सोचा कि 500 इससे डिविजिबल है, तो मैंने एक नंबर 500 ले लिया. अब अगर मैं इस नंबर को 2205123 से 500 को डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 4410. यानी कि आपके पास दो नंबर्स ये हो, आपके पास कोई और भी हो सकते हैं, सो मेनी ऑप्शन हो सकते हैं, बट दीज आर द टू नंबर्स. आप देखो 500 भी 175 से भरा है, 4410 भी 175 से भरा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर भी आ जाता है. तो इसका मतलब है कि वो दो नंबर्स ये हैं. गॉट इट? Yes, Miss. एक्सप्रेस 1050 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. तो ये प्राइम नंबर्स में तो हमें इतना अच्छा करना आ गया है कि हम इसको फॉरन से कर लेते हैं. तो 2 times 5 is 10, 2 times 2 is 4 and 5 is 10. 5 times 1 is 5, 0 and 5 is 25. 5 times 2 is 5 and 1. 3 times 7 is 21. 7 times 1 is 7. तो 1050 को प्राइम नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7. तो ये पार्ट 1 तो हमारा जल्दी से कंप्लीट हो गया. अब पार्ट 2 क्या है? फाइंड टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 40. दोनों नंबर्स 40 से भरे हों, that they have a great highest common factor of 21. फिर सेम वही क्वेश्चन आ गया. HCF क्या होगा उन दोनों का? 21. और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या होगा उन दोनों का? 1050. समझ आई? अब हमारे पास रूल क्या होता है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ये रूल होता है. अब इस रूल के अकॉर्डिंग A इंटू बी किसके इक्वल होगा? HCF क्या होगा? 21. व्हाट इज द LCM? 1050. तो A इंटू बी 21 को 1050 से मल्टीप्लाई करें, क्या मिला आपको? 22050. अब आपका जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 22050 है. अब आपने कोई भी ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जो कि ग्रेटर देन 40 हो और उनका जो प्रोडक्ट करें हम, तो आंसर 22050 होगा. वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? 40 से ग्रेटर होने चाहिए और डिविजिबल भी हो. फॉर एग्जाम्पल 40 से ग्रेटर में 41 तो इसे डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं 42 ले लेती हूँ. एक नंबर 42 अगर मैंने ले लिया तो 22050 को जब मैंने 42 से डिवाइड, आंसर क्या आया? 525. तो अगर मैंने एक नंबर 42 लिया तो दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 525. तो आपने देखा दोनों नंबर 40 से ग्रेटर हैं, तो वी गेट आवर आंसर. बच्चों HCF हमें गिवन था 21, LCM हमें गिवन है 1050. रूल हमें पता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, so we get 22050. अब we have to think of a number जो कि 22050 के प्रोडक्ट में दो नंबर्स हों और वो 40 से ग्रेटर. तो 40 से ग्रेटर 41 इज नॉट डिविजिबल बाय 22050, तो मैं 42 ले लेती हूँ. तो जब कोई टेक 42 तो इसको डिवाइड किया, आई गेट 525. तो टू नंबर्स मुझे मिल गए 42 एंड 525. ऑल क्लियर? Yes, please. Yes. Okay, good. Sasha needs to pack 171 pens and 63 pencils equally into identical gift bag. तो largest number of gift bags that can be packed. तो जब भी हमने largest number find करना होता है बच्चों, हमें क्या करना पड़ता है? HCF लेना पड़ता है. अब हम इन दोनों का HCF लेंगे, और हमें अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि HCF वगैरह और LCM वगैरह रिपीट कर दें, तो ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने अलग से रिपीट नहीं किए. तो आप लोग ध्यान से सुन लो कि अब इसका HCF कैसे लेंगे. 3 times 5 is 15, 16, 17. 3 times 5 is 15, 6, 18. 7 is 21. 3 times 2 is 6, 1 is 3. 3 times 1 is 3, 9 is 27. 3 times 7 is 21. तो आपको पता है कि 19 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता. तो बच्चों HCF में क्या करते हैं? हम सिर्फ तब तक ही फैक्टर्स बनाते हैं जब तक दोनों नंबर्स के साथ वो फैक्टर्स डिविजिबल हो. अब 19 और 7 एक टेबल में नहीं आते, तो वी आर नॉट गोइंग टू मूव फर्दर. तो हमने सिर्फ यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास आएंगे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 into 3 is 9. So 9 is the HCF. तो जहां पे भी आपके पास लार्जेस्ट नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर के पास आएगा, यू हैव टू टेक द HCF. और HCF में आपने सिर्फ यहाँ पे स्टॉप कर देना है व्हेन यू डोंट गेट एनी मोर कॉमन नंबर्स. सो दिस इज कॉल्ड द HCF. ओके, सो 9 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग्स इट कैन बी फॉर्म. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ ईच आइटम इन द गिफ्ट बैग. तो हर
अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि गिफ्ट बैग में ईच आइटम, यानी कि गिफ्ट बैग में कितने पेन होंगे और कितनी पेंसिल्स होंगी। तो बच्चों जो ये रिमेनिंग होंगे ना, वो उसमें बच जाएंगे। 19 पेन्स होंगे, 171 पेन्स थे तो 19 बच गए, तो 19 पेन्स होंगे हर बैग में और 7 पेंसिल्स होंगी हर बैग। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। इट नंबर ऑफ ईच आइटम, जब आप इससे फाइंड करोगे तो जो रिमेनिंग आएगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच बैग। अब आप देखो 19 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 9 से तो क्या आता है, ये मैं चेक करने के लिए बता रही हूँ कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा यहाँ आ गया। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है बच्चों, हरिया। बच्चों 19 को 9 से नहीं मल्टीप्लाई करना आ रहा। 171। 171, तो देखा आपने। अच्छा, अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 63। तो अब आपने देखा कि हर बैग में 19 पेन्स है और कितने बैग्स है, 9। अब उसने कितने बैग्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर बैग में 19 पेन्स डाले तो टोटल 171 पेन्स बन गए ना। इसी तरह उसने 9 बैग्स बनाए, हर बैग में 7 पेंसिल्स डाली, तो टोटल 9 × 7 63 पेंसिल्स बने। समझ आ गई। तो सबसे पहले उसने कहा कि हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग बनेंगे कितने। तो हमने देखा कि टोटल 9 गिफ्ट बैग्स बनेंगे। हर बैग में नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, 19 होंगे, और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी, 7 होंगी। क्लियर हो गया बच्चों। Yes. ओके। Sweets are sold Yes. in packs of 120, while mini chocolates are sold in packs of 18. Sara bought the same number of sweets as the mini chocolates bars. Find the least number of packs of sweets that she could have bought. तो बच्चों ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है जिसमें हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 4 12, 0 6 18, 3 1 नहीं 3 तो ये होगा। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, राइट। तो 2 2 4 0 2 3 6। अच्छा, अब एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स ले लेते हैं। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 3 times 2 which is 6, और अनकॉमन फैक्टर्स आर 20 times 3 which is 3 to the 60। तो 60 into 6, एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर which is equal to 360। तो LCM 360 आ गया। अब वो कहने फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ स्वीट्स दैट शी हैव बॉट। तो हमारे पास स्वीट्स के हमने पैक फाइंड करने हैं। तो स्वीट्स के कितने, स्वीट्स आर सोल्ड इन पैक्स ऑफ 120। स्वीट्स 120 पैक्स में सॉल्व हुई, तो हमने लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स के पैक सॉल्व करने हैं। तो हम 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 120 से। तो नंबर ऑफ स्वीट्स के पैक कितने आ गए, 3। समझ आई। अगर यहाँ पे स्वीट्स की जगह चॉकलेट बार्स लिखा होता तो हमने किससे डिवाइड करना था, 18 से। अब यहाँ पे स्वीट्स लिखा हुआ है तो हमने 120 से डिवाइड किया बिकॉज देर आर 120 स्वीट्स। अगर यहाँ पे चॉकलेट बार लिखा होता तो हमने क्या करना था, किससे डिवाइड करना था। यस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स समझ आ रही है। स्वीट्स Yes, miss. 120 है, चॉकलेट बार्स 18 है, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 360 आ गया। अब क्योंकि वो कह रहे नंबर ऑफ स्वीट्स पैक फाइंड करो, तो नंबर ऑफ स्वीट्स पैक 120 थे, तो आपने 120 से डिवाइड कर दिया है। अगर उसने लिखा होता है नंबर ऑफ चॉकलेट बार फाइंड करो, तो चॉकलेट बार 18 है, फिर आप 18 से डिवाइड करो। ठीक है, तो फिलहाल आपने 3 से 120 से डिवाइड किया, यू गेट द आंसर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। टू रेस कार्स, कार एक्स एंड कार वाई, at the starting point of a 2 kilometer track at the same time. Car X and car Y make one lap every 60 seconds and every 80 seconds respectively. How long in seconds will it take for both cars to be both at the starting point at the same time? तो बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आता है एट द सेम टाइम वाला, तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम के एलसीएम। यस बच्चों, जब सेम टाइम पे सब एक चीज ने होना होता है तो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। तो 2 3 6 0 2 4 8 0, 10 3 30, 10 4 40। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए 2 into 10,
अनकॉमन फैक्टर्स आ गए 3 into 4, 10 2 20, 4 3 12, और हमारे पास जो क्या नाम है एलसीएम आ गया वो होता है अनकॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, 2 to the 4, 2 and the 2, 240. तो एलसीएम हमारे पास आ गया 240, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 240 है। अब वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी द 5 laps ahead of the slower car। तो इसमें क्या होगा हमारे पास 240 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 4 20, 5 2 10 11 12 1200। बट अब हमारे पास यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग हाउ लॉन्ग इन मिनट्स उसने कहा फाइंड करना है, बट हमारे पास यहाँ पे 240 हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स, तो ये हमारे पास 240 सेकेंड्स आया है आंसर। तो 240 सेकेंड्स को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेकेंड्स में आया, बट नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। 1200 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 मिनट्स। समझ आई बच्चों? 240 आपके पास कैसे आया, एलसीएम आया, और आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज इन सेकंड्स, तो आंसर इज इन सेकंड्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन में 5 लैप्स फाइंड करनी है, तो वो मल्टीप्लाइड विद 5, बट द आंसर इज स्टिल इन सेकंड्स। बट इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सेइंग टू फाइंड इन मिनट्स, तो मिनट्स में फाइंड करने के लिए we just need to divide it by 60 because 1 minute में 60 seconds होते हैं, so we get 20 minutes। So we are done everything with question now with chapter number 1। chapter number 1 का जितना part था we have completed। We are done with the prime factors, prime numbers, composite numbers, prime factorization. Then we are done with the perfect squares, perfect cubes, highest common factors, least common factors। तो आप लोगों ने बच्चों कोशिश